Good evening, ladies and gentlemen. In just 5 days, Lord Ram will return to his rightful place after a wait of 500 years. Today is a very significant day towards the culmination of the Pran Pratishtha. The Kalash Pujan was done by Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust member Anil Mishra. Kalash filled with water of the Saryu river were taken to the abode of Ram. On the 22nd of January, the unwavering astha of billions of Ram devotees will finally be fulfilled. At the very heart of Bharat's cultural renaissance is the city of Ayodhya. This is where we will witness a historical moment when Bharat will reclaim its legacy in culture. Even I will be headed there tomorrow to get a darshan of Lord Ram. I will be joining you live from tomorrow from the holy land of Ram Nagri, Ayodhya Ji, and the sacred ghat of Saryu. But while people from all castes, stratas, and even religions embrace Ram on this momentous occasion, there are some who have boycotted the Pran Pratishtha. NCP Supremo Sharad Pawar rejected the invite today, saying that he will visit, but after the 22nd of January, when the mandir is complete, taking a dig. RJD patron Lalu Prasad Yadav has said no after his son Tej Pratap said that in his dream, Lord Ram said that even Ram won't go for the Pran Pratishtha. Congress's Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and Adhir Ranjan Chaudhary have anyway tagged it a BJP RSS political event and rejected the invite. Watch how curtly Lalu rejects the invite while Sharad Pawar credits Rajiv Gandhi for the mandir instead. सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे सर. खरं सांगायचं म्हणजे त्या मंदिराचा इतिहास जर बघितला तिथं मंदिर बाबरी मस्जिद फाडल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली. त्याला शिलान्यास हा जो झाला तो राजीव गांधींच्या कालखंडामध्ये शिलान्यास झाला. नंतरच्या काळामध्ये काही लोक कोर्टामध्ये गेले आणि कोर्टामध्ये ती केस अनेक वर्ष चालली. But it doesn't just stop quite there. Now, while Bharat is steeped in Astha, the opposition, which calls itself the India Alliance, is planning rallies to try and diminish the Mandir wave. Rahul Gandhi has embarked on Bharat Nyay Yatra. He will walk 1,074 kilometers in 11 days across 20 districts in Uttar Pradesh, but will give Ram Nagri Ayodhya Ji a miss. Trinamool Congress Chief Minister and Bengal Chief of TMC, Mamta Banerjee, has rejected the invite to the Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony and has announced a parallel all-faith Sampriti Yatra on the 22nd of January itself. Not one to be left out, Akhilesh Yadav, the Samajwadi Party Supremo, has said that neither BJP nor Congress invites him, so he will embark on his own PDA Yatra or Pichhda Dalit Adivasi Yatra. Listen to Akhilesh Yadav. देखिए, बीजेपी अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाती, बड़ी मुश्किल से बुलाती है. कांग्रेस अपने कार्यक्रम में बुलाती. ये समाजवादियों की लड़ाई है, अलग लड़ाई है, लेकिन गठबंधन मजबूत हो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं. This is in sharp contrast to the rest of Bharat, which is eagerly embracing Lord Ram. Yesterday, Prime Minister Modi joined in the Ram Dhun at the Veerbhadra temple in Andhra Pradesh's Lepakshi and hailed Ram as the embodiment of righteousness. In fact, in a BJP strategy meeting, Amit Shah is also said to have asserted that it is the BJP that has the adhikar over Lord Ram. He said, "We speak about cultural nationalism," and clearly owned up the BJP's reverence to Lord Ram and his participation in BJP's basic manifestos over the last several decades.
Now let's remind you of the list of excuses that the opposition has been making as far as the Ram Mandir is concerned. The RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. প্রাণ প্রতিষ্ঠা আমাদের কাজ না, ওটা সাধু সন্তদের কাজ, পুরোহিতদের কাজ, ইমামদের কাজ, আমাদের নয়, বিভিন্ন ধর্মের চার্চ ফাদারদের কাজ। गर्भगृह था, वहाँ मंदिर होना था। जो हमने गिराया था वहाँ मंदिर होना था, वहाँ मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहाँ मंदिर नहीं बना, आप जाकर देख लीजिए ना। हमको तो सपना में आ गया, राम ने खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। By rejecting the Ram Darshan, maligning him as either a BJP agent or a putla, the Congress seems to have alienated even their own cadres. After Uttar Pradesh Congress legislators went for a dip in the Saryu on 15th of January, now former Congress state chief Nirmal Khatri says he's proud to be a Ram Bhakt. In fact, he also cautioned his party against politicizing Astha. This is what he says. राम भक्त होना कोई पाप नहीं, मुझे इस भक्ति पर गर्व है। किसी भी दल या संगठन की विचारधारा से लड़ाई वैचारिक आधार पर अपने संगठन को मजबूत करके ही की जा सकती है, ना कि कोई जवाबी इवेंट करके। इवेंट की लड़ाई में हम अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मेरा ये आग्रह है कि इवेंट की पॉलिटिक्स को छोड़कर हम अपने विरोधियों के साथ वैचारिक धरातल पर अपने संगठन को मजबूत करके और उसके द्वारा जनमानस में अपनी भावना का प्रचार प्रसार करके भावना के साथ बता सकते हैं। After this stinging attack on the Congress top brass from their own cadres, watch how Union Minister Anurag Thakur said that Anyay against Ram and Ram Bhakts is the reason for the Congress's decline. जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा, चाहे। So the legitimate question we are asking on the news hour tonight is this the opposition's Mandir Virod, or is it really only Modi Virod that has completely consumed them? That's the question, and that's the debate coming up on the other side. You're watching the News Hour at 9. Debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Joining the debate tonight, GVL Narasimha Rao, Member of Parliament and National Spokesperson of the BJP, Ishkaran Bhandari, Advocate in the Supreme Court. Joining me in the studio to my right, extreme right is Ishkaran Bhandari, and then to my right is Abhijit Iyer Mitra, Senior Fellow at the IPCS. To my left, Vinod Agnihotri, Senior Journalist. Next to him, we have Advocate Kapil Madan, Political Analyst, supports the Congress Party. Also to his left is Akhilesh Katiyar, National Secretary and Spokesperson of the Samajwadi Party. And Vivek Srivastava, Political Analyst and supports the left parties, joining us on a live link from Delhi. First up, let me ask you, Advocate Kapil Madan. The Congress party is at pains somehow or the other to avoid going to Ayodhya on the 22nd of January. Well, that's your right and that's Rahul Gandhi's right. पर फिर उसी दिन आपको किसी मंदिर में क्यों जाना है? भाई इवेंट की कंपटीशन इवेंट से क्यों कर रहे हो? This is not a question that I'm raising. Nirmal Khatri is raising. Acharya Pramod Krishnam of the Congress party is raising. Lakshman Singh, Digvijay Singh's own brother is raising these questions. कि आपको हो क्या गया है? When you start doing competition to avoid Ram,
people will ask you, is it Ram Virod, Mandir Virod, or is it Modi Virod that is completely consuming you? Navika ji, I will just say one thing here. It is not virod of any individual. It is a virod against politicization of religion. Now let me just make one small mention. Let me take you down to the history lane. Do you know who is Gopal Singh Varshat? You will not hear his name from anyone in the BJP. He was the first person who filed his suit claiming his right to pray at Ram Mandir. Do you talk about it? Does Mr. Modi talks about it? Any of the minister in the Modi government talks about it? कोई बात नहीं कर रहा। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये 1950 से ये एक लिटिगेशन की लड़ाई एक लिटिगेंट ने लड़ी, और आज मोदी जी ये पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं कि ये शायद भगवान की कृपा से नहीं हो रहा, ये शायद मोदी जी की कृपा से मंदिर बन रहा है, जो कि जिससे मतलब मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही एक आपत्तिजनक सी सिचुएशन है, जहां पे ऐसे पिक्चर्स पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, जहां पे एक पिक्चर में दिख रहा था और वो कर्नाटका बीजेपी ने पोस्ट किया, जहां पे भगवान श्री राम को मोदी जी लेके जा रहे हैं। अरे भगवान श्री राम की कृपा से मोदी जी चल रहे हैं, भगवान श्री राम की कृपा मोदी जी पे है या मोदी जी की कृपा भगवान श्री राम पे है? ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है। मंदिर बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मंदिर पे जाना और कब जाना ये बीजेपी तो नहीं डिसाइड कर सकती। ये बीजेपी के डिसीजन और उनका जो स्केड्यूल है, मोदी जी के स्केड्यूल है, उसके स्केड्यूल से तो नहीं डिसाइड हो सकता। और मुझे एक और बात बताइए, मुहूर्त obviously has nothing to do with it. Shankaracharya, you invoke Shankaracharya all the time. The Congress party has been talking about objections raised by the Shankaracharyas. But Samay and Muhurat, that you don't care for. So you care for things that suit you. You don't care for the things that don't suit you. GVL, I'm coming back to you. GVL Narasimha Rao, let me ask you. GVL Narasimha Rao, today they are completely in memory of the first litigant. Can you please remind them that they did no favor to the litigant? They were standing against the litigant in this entire case. In fact, they are the ones who said Ram is a mythological figure. Today, they are talking about the right to pray at the Ram Mandir or at the Janmabhoomi Sthan of the first litigant when they had nothing to do with the Andolan, with the litigation. Please respond to him, GVL Narasimha Rao. Navika ji, to you and all the panelists and the viewers, good evening and Jai Shri Ram. You see, the Congress party is looking for newer and newer excuses. And the so-called pseudo-secular allies of the Congress party who got together in the form of an alliance, they have prevented their best in the states and also at the central level where they were in power, when they were in power, to prevent any solution to the vexed issue of Ayodhya Rama Janmabhoomi title dispute. The Congress party, because the Allahabad, the Prayagraj airport delivered judgment after several decades. And who was in power for a large part of that period? It was the Congress and then the Samajwadi Party. And they delayed even the decision in the Supreme Court by, in fact, you remember Kapil Sibal telling the court not to deliver judgment because this will influence politics. What does not influence politics here? If a solution to the Ram Janmabhoomi, if the Congress party really wanted a solution to it, it could have been arrived at in 1948, 1947. It was purely the intransigence of the Congress party and their vested vote bank politics, which actually hardened the stand of the Muslim Paksh. They would have easily given up their claims on this because Babar is no Bhagwan. And Babar actually built this temple, built the disputed structure over a temple that pre-existed. And the Muslim side never looked at this as a place of great worship. They would have easily given up their claim. But the Congress party, it is the real litigant against the Hindus, were not the Muslim Paksh. It was not the Muslim Personal Law Board or anyone. It was the Congress party and the Gandhi-Nehru dynasty. It was actually them who did not want a solution to this because they saw this as a vehicle for their vote bank politics. Very unfortunate for the cause, and extremely, I think they were the ones who actually radicalized
They were the ones who were responsible for hardening of the stance. Whether it was Kashi, Mathura, Ayodhya, all this could have been resolved with great amity, peace, and communal harmony in 1948. It is the Congress which must take the blame for actually creating this Hindu-Muslim divide in this country. Counter Kapil Madan. I heard, Mr. Rao very patiently, and his entire, statement. I think facts are the biggest casualty. Let me just remind him, Mr. Vajpayee and Mr. Lal Krishna Advani were in politics for several decades. You saw it was only in 1991 when they made this as a political plank. The BJP came up with the first manifesto in 1984. In 1984, the BJP's first manifesto came and this issue was not there. The BJP brought this issue in their manifesto for the first time in 1996. And let me remind Mr. Rao that it was in 1991's Congress manifesto this issue find mentioned. And it was in 1986 during Rajiv Gandhi's government from 1950 till 1986 when the temple was locked. It was at the insistence of Rajiv Gandhi's when the locks were opened. Fantastic. Now to say, but that's not politics. Ishkaran Bhandari, that's not politics. Stating facts. That is not politics. I am saying facts. The credit. No one is saying. I am saying. 1 minute. Kapil Madan. 1 minute. Kapil Madan. The fact is, when Rajiv Gandhi was in power, he got the locks opened. Okay? Today, Narendra Modi is in power. He is going for the Pran Pratishtha. How are you finding it so difficult to accept that? There is no Ishkaran Bhandari, please respond. Back then, there was no politicization in the name of religion. So that's exactly the, Navika ji, I am always delighted when Congress goes into the history, because history is never pleasant to the Congress, because we are not living in the era of command journalism. We are not living in the era of DD. We are living in the era where Times Now will cover the entire debate. So today, Ram Mandir, they do not want to go because they call it a BJP event. Let's go into history. A parallel is Somnath Mandir. Somnath Mandir, where Sardar Patel promised Somnath will be rebuilt. Somnath Mandir, where a cabinet minister, Mr. K.M. Munshi, was leading the effort to rebuild. What did the first prime minister of the same family say to Somnath Mandir? A Congress event, where he said, you're trying to rebuild it as Hindu revivalism. He was opposed to a large-scale rebuilding program at Somnath, and he wrote this to both Mr. K.M. Munshi as well as Dr. Rajinder Prasad. The answer of Mr. K.M. Munshi is relevant today also. I can assure you that the collective subconscious of India today is happier with the scheme of reconstruction of Somnath sponsored by Government of India than with many other things we have done or are doing. तो उस समय ना जाने का reason, even though BJP was not in existence, was still the same, that I will not go to Somnath Mandir. It is Hindu revivalism. Today the reason is it is a BJP event. Whereas at the other side, the confused Congress party wants to say Rajiv Gandhi started his campaign at Ram Janmabhoomi Ayodhya, I think 89 campaign or something. He was the one instrumental in opening the locks. That was monkey balancing Shah Bano judgment. It was not Astha. It was a monkey balancing happening, and that also happened by courts. So how did Rajiv Gandhi open it? The court ordered that locks can be opened because it will not lead to a law and order situation. But now when a court judgment comes and the Prime Minister proudly wants to go there, they say Prime Minister is getting it. So emphatically, let me just end it by saying, from beginning of Somnath to Ram Mandir, Congress has always been on the side of not going to Mandir, and they tried to stop Krishna Janmabhoomi and Kashi by Places of Worship Act again in the Congress government. And when Krishna Janmabhoomi happens, when Kashi proper happens after a court judgment, they will again be doing this debate, and I can bet they will again not attend it. Well, let me get in Mr. Akhilesh Katiyar. Akhilesh Katiyar ji, अब राम की भक्ति का समय है, 500 साल का इंतजार हुआ. This civilization has waited for 500 years. 3 lakh people have given up their lives, as historical records show us. 16 of them have been admitted to have, Kar Sevaks have been admitted to have been killed by the Samajwadi Party government then in power. And even if it were many more, it has been stated by Mulayam Singh ji that that would have been done. Having said that, my question to you is, कुछ दिल बड़ा करने का समय नहीं आ गया? अखिलेश जी एक तरफ कह रहे हैं ना बीजेपी बुलाती है ना कांग्रेस, तो कांग्रेस ने नहीं बुलाया, आप उनके साथ तो बैठे हुए हैं.
जिन्होंने निमंत्रण दिया उनको, जिन्होंने कार सेवकों को मारा, उनका बड़ा दिल नहीं आपको दिख रहा, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। पॉलिटिक्स तब नहीं हुई थी, इस देश में पॉलिटिक्स हर चीज पर नहीं होती है। जी नाबिका जी, 500 साल की लंबी यात्रा के बारे में आपने जिक्र किया। हम लोग आज़ादी के 75 साल के बाद बैठे हैं, सभी संगठन के लोग हैं, मंदिर बन रहा है, सभी लोग कह रहे भाई खुशी की बात है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, अब इस पर कोई बात नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आ गया, फैसला आ गया। 500 साल से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई पीडीए की यात्रा, हम पीडीए के संघर्ष के लिए, पीडीए के लिए, पिछड़े दलितों के लिए, 500 साल में तो दलितों को मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता था। देविका जी, इस देश में जिन्हें हिंदुओं की बात करते हैं, 90% आबादी डॉक्टर अंबेडकर से लेके कई नेताओं ने मंदिरों में घुसने के लिए संघर्ष किया। अब देश आजाद है, भारतीय जनता पार्टी से ये भी पूछिए कि कुछ पुजारी भी दलित पिछड़े लगेंगे क्या वहां पे? अब तो संविधान की सत्ता है। मोदी जी क्योंकि ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन पे भी सवाल उठ रहे हैं। आजादी के बाद 75 साल के पीरियड में इन दलित पिछड़ों के जीवन में भी कुछ बदलाव आएगा क्या? हम सनातन की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, इस संविधान से थोड़े बहुत अधिकार मिले कि आज हम खद्दर का कुर्ता पहन के आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, क्या उन संवैधानिक अधिकारों की भी बात इसके साथ होगी? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पे बैठे हैं, क्या अब मानो बराबर की बात होगी? अब ज्ञान सुनने पे कान में रांगा नहीं पिघला के डाला जाएगा? हमारे इस देश में 90% आबादी जो दलित, मजदूर, किसान, पिछड़े हैं, उनके लिए भी कोई नई बात होगी क्या? अब ये विकसित भारत क्या परंपरावादी चलेगा, रूढ़वाद से चलेगा, अंधविश्वास से चलेगा, पाखंड से चलेगा, या नया भारत बनेगा जिसमें सब बराबर तो होंगे? आज एक ओबीसी प्रधानमंत्री अगर प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है तो आपको साफ दिखना चाहिए, आप अलग क्यों दिख रहे हैं? अभिजीत अय्यर मित्रा, so this is, he's encapsulated the entire debate. His problem is that an OBC prime minister is doing the pran pratishtha. They can't deal with it because you see, and who are they hiding behind? They are hiding behind some of the worst castists. I'm not going to repeat what those castists have said, but the kind of terms they have used for people, and mind you, it is all the secular parties, so-called quote-unquote secular, who are hiding behind the worst castists. They have always done this. They have always used those castists as Trojan horses to undermine Hindutva. What is Hindutva? It is overcoming caste division so that you identify as a Hindu first over your caste. So this entire argument is a complete fabricated argument. They can't and mind you, they then bring up all kinds of obscurantist interpretations of Hindu law. I just want to point out, people who have raised all these objections that you can't do this before the entire temple is built and all of that, they have not cited a single source, not one source. So much for their great erudition and knowledge of the texts and whatnot. There are hundreds of examples within India which are very clear that only the Garbhagriha has to be finished before the deity is installed. In fact, the Garbhagriha is built around the deity. So I'm sorry, none of this argument makes any sense. Second, when it comes to credit, tell me, 1971, did Sam Manekshaw and Indira Gandhi win it? Or was it General Thimayya, or even before that the British who did it, because they created the British Indian Army, they equipped the Indian Army. So technically India didn't win in 1971. Indira Gandhi didn't win in 1971. Winston Churchill won the war in 1971 and 1965. ये कोई argument हुआ? बहुत अच्छी बात है भाई. Last, these people keep saying this constant, what is this need to insult? Our SP friend out here, I'm very glad that his leader Akhilesh Yadav has chosen Akhilesh Yadav did not insult. He simply said, we want to come there, bhakti ke liye hum aayenge, we want to take the blessings of the Lord. He did not make any other comments about it, and he has done it a very good way. All the others, mind you, the Congress especially, in their letter that the Congress handle put out, religion is a personal thing. Bhai, are you living in India? This shows you how completely divorced from the reality of India they are. When has religion ever been a personal thing in India? All religion is congregational. All religion is a public display. Be a personal thing. Be it a satsang, religion is always a personal thing, and so is spiritualism. No. I'm sorry, it never is. Religion it never is a personal affair, It never is. It never is. Especially in India, it is not. If you Especially in India, it is not. This is complete fabrication. Complete fabrication. This is what Mao Zedong and Lenin have taught our friend out here. All right. Counters coming in. Religion is not personal. Religion is not personal, says
Abhijit, counter. On what? I'm coming to you, Ishkaran, but on what basis are you countering Abhijit, Vivek Srivastava? Absolutely. I totally agree with the line of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, that when he did not go to Somnath temple, it was not because he was anti-Hindu. It is not because he was not a religious man. It was simply because he wanted to show that the state is neutral and the constitution is same for all. And Dr. Rajendra Prasad did not understand it. Only Pandit Nehru. Only Pandit Nehru understood. And Dr. Rajendra Prasad broke the constitution to go there. And the mandir was complete. In 1951, the consecration took place. The mandir was completed in 1965. Something. Religion is private. Why are Congress wala showing pictures of themselves immersing in the sari? Why does Rahul Gandhi have to go make a whole dhong and tamasha about him going to a temple and his spokesperson say Janaudhari Brahman hai, aise वैसे Brahman nahi hai, Janaudhari hai. Unfortunately for them, at that time Congress was not entirely a family concern. So I'm quoting Sardar Patel now, because I presume you call him a congressman even today. On an auspicious day of New Year, we have decided Somnath should be reconstructed. You, the people of Saurashtra, should do your best. This is a holy task for which we should all participate. This is the view of Sardar Patel. Ab to maan jao ke it was only Nehru Gandhi family which opposed these projects, and when they captured power after Sardar Patel wasn't there, after Dr. Rajendra Prasad wasn't effective, that they came to this definition where in emergency they had to include the word secular to satisfy a vote bank. Well, विनोद अग्निहोत्री जी, ये एक इशू है जो लीगल इशू था, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सेटल हो गए, लेकिन अब इशू है कि 5 साल गुजर गए, तब कुछ सेलिब्रेशन के लिए मना किया गया था कि एक कम्युनिटी को बुरा ना लगे, और ऐसा श्री रविशंकर जी ने मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि तब नहीं किया, अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो सेलिब्रेशन का भी टाइम है, हिंदू सिविलाइजेशन और राम राम इस देश की कल्चरल इथॉस में है. इट इज नॉट ओनली रिलीजियस. हम एक दूसरे को राम राम कहकर नमस्ते प्रणाम बाद में कहते थे, राम राम कहा जाता था. महीने बाद कर लेते राम राम. नहीं, आप तो नहीं कहते थे, आप तो शुरू से ही कम्युनिस्ट हैं. 2019 के बाद कर लेते केस को, अब 3 महीने बाद ये कर लेते. हिंदू कोड बिल के समय मुस्लिम मिनॉरिटी इज नॉट रेडी, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएंगे. डिले टू डिनाई. दैट विल नॉट वर्क. तो विनोद अग्निहोत्री जी, सवाल ये है कि राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें इतनी दिक्कतें. एक बहाना है कि पहले ये था कि तो बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है, निमंत्रण जब सबको जाने लगे तो ये पॉलिटिकल रैली हो गई. मतलब मिलेगा इनविटेशन तो भी क्रोध और नहीं मिलेगा तो भी क्रोध. ये किस तरह की दुर्भावना है, और क्या ये कहीं ना कहीं मोदी विरोध नहीं है? देखिए नाविका जी, पहले तो मैं राम के बारे में बता दूं आपको कि राम जो है, राम रामे रमे रामे मनोरमे साहस नाम तातुलो राम नाम वरानने, यानी राम वो है जो सब में रमता है और जिसमें सब रमते हैं वो है राम. और इसीलिए राम जो है, दशरथ नंदन राम को हम राम के रूप में जानते हैं. कबीर के राम निर्गुण थे, तुलसी के राम सगुण थे, वाल्मीकि के राम जो है वो महापुरुष थे. तो राम के अलग अलग व्याख्याएं हमारे यहाँ हैं. और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ. अवध क्षेत्र जो है, जो पूरा, सिर्फ अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा अवध क्षेत्र जो है, वहां जब ताजिया निकलता था ना, हम लोग बचपन में, मैं उधर का रहने वाला हूँ, 9 जिले का हूँ, तो मुस्लिम महिलाएं ताजिए में गाना गाते हुए क्या जाती थी? हमारे इमाम हुसैन पियासे मार दिए, हाय राम हम का करी. ये है राम का महत्व. अब दिक्कत क्या है, राम के नाम पर राजनीति इस देश में पहली बार नहीं हो रही है. 1988 में जब भारतीय जनता पार्टी ने पालनपुर अधिवेशन में इस मुद्दे को अपने एजेंडे में शामिल किया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने फर्स्ट टाइम. उसके पहले ये मूवमेंट नॉन पॉलिटिकल था. विश्व हिंदू परिषद, राम जन्मभूमि न्यास और तमाम सारे संगठन इसको करते थे. तो जब वहां से राजनीति शुरू हुई, और चूंकि जो अभी भंडारी जी ने कहा कि शाबानों वाला एक मसला था, जाहिर है उसको बैलेंस करने के लिए ताला खुला, शिलान्यास हुआ, और ताला वैसे ही खुला. देखिए, ताला भी अदालत के आदेश से खुला और राम मंदिर निर्माण भी अदालत के आदेश से हो रहा है. दोनों काम अदालत के आदेश से हुए. और अदालत, लेकिन आज पॉलिटिकल है, तब पॉलिटिकल लेकिन सरकारों की भूमिका मैं बता रहा हूं. उस वक्त जो ताला खुला वो इसलिए खुला कि जब मजिस्ट्रेट ने पूछा
डीएम और एसपी से कि भाई लॉ ताला बंद क्यों था, ताला इसलिए बंद हुआ था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी इसलिए ताला बंद था। जब डीएम और एसपी से पूछा गया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, तो उन्होंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहां सरकार का रोल आ जाता है क्योंकि ये क्लियरेंस था ऊपर से। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके लिए रास्ता साफ किया, वो जल्दी करवाया, डे टू डे हियरिंग करवाई। तो इसलिए ताला खुलवाने का श्रेय कांग्रेस लेती है, राजीव गांधी को देती है, और भारतीय जनता पार्टी श्रेय लेती है राम मंदिर निर्माण का। और श्रेय लेना चाहिए क्योंकि आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने ही किया उसके लिए, उसी के लिए लगातार आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली, तो उसके एजेंडे में था। अब राजनीति याद नहीं हो रही है, अब चूंकि श्रेय का मामला है। अब कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस इसमें तय ही नहीं कर पाई इसको क्या करना। एक मिनट में बोल लीजिए प्लीज। कार्यक्रम कांग्रेस तय ही नहीं कर पाई करना क्या है उसको। कभी तो आप श्रेय लेते हैं कि साहब हमने ताला खुलवाया, हमने जो शिलान्यास करवाया, नेहरू जी के टाइम में मूर्तियां रखी गई, पंत जी चीफ मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव के टाइम में बाबरी मस्जिद गिरी, तो हमारी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए रास्ता साफ हुआ। आप श्रेय लेते हैं और फिर आप डरते भी हैं। या तो तय कर लीजिए कि श्रेय नहीं लेना है। तो डरते क्यों हैं? क्या ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, और क्या कांग्रेस कहीं भी कुछ कम पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी से? क्योंकि नहीं, कोई कम नहीं कर रहा है, दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बीजेपी इसका पूरा श्रेय लेके इसको लोकसभा चुनाव का मुद्दा बना रही है, और कांग्रेस जो है। कपिल मदान जी, आप जवाब दीजिए ना कि पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं बीजेपी कर रही है, जबकि दुनिया को दिख रहा है कि जब आपको समय मिला आपने भी खूब पॉलिटिक्स की, तो दोष किसे दे रहे हैं भाई? देखिए नाविका जी, इसमें पॉलिटिक्स का कोई सवाल नहीं है। अगर आप कांग्रेस का ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी देखेंगे, उन्होंने यही बोला कि इसकी राजनीति नहीं होनी चाहिए और रिलीजन इज अ पर्सनल मैटर। मैं मित्रा जी को सुन रहा था, मित्रा जी ने, मुझे नहीं पता कि किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि नहीं रिलीजन इज नॉट अ पर्सनल मैटर। अरे भाई, अगर कोई राम राम नहीं, अगर कोई राधे राधे अपने घर में करता है तो क्या वो कम हिंदू है? क्या अगर कोई भगवान शिव का भक्त है तो क्या वो कोई कम हिंदू है? अगर कोई दुर्गा माता का भक्त है, अगर कोई दुर्गा माता का भक्त है, कोई अगर दुर्गा चालीसा पढ़ता है, तो क्या कोई वो कोई जय माता दी बोल के एड्रेस करता है तो क्या वो कम भक्त है? मुझे नहीं पता कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट यही है कि इस देश में सत्संग होते आए हैं, भजन कीर्तनों के सभा होती आई है, पर्सनल नहीं, कम्युनिटी सर्विस होता रहा है। नाविका जी, whatever little I have understood, I am trying to read and understand Bhagavad Gita. The essence which I got, that says God is one. You may take any means, you may manifest any form of God. Absolutely. Ultimately, But don't force it on others. It may be personal to you. Of course. Yes. So then why you judge other people's religion? But then Kapil Madan, the question will be, but then Ishkar, the question is being asked of them, why were they against the Ram Mandir? Why have they brought in the 1991 places of worship act? अगर सब नाविका जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ी let him respond and then let him respond. Navika ji, firstly, I completely agree with Abhijit. To say religion is a personal matter in India, where you want a right to wear hijab to school, where you believe loudspeakers are a fundamental right, and anybody who opposes loudspeaker is opposing your religion, is a debate happening in vacuum. Let us be very real. What is the ground reality of India? No matter what we say in TV debates or what we say in intellectual forums. The second aspect of which is even more important, what Agnihotri ji was saying, I was also arguing on that. So when the government decides, they can go to the court, the DM can say locks can be opened. That means for 30 years, the locks were kept locked because they did not want to provide security. That is the hidden point of it, and that started under the Nehru government, which is my basic point. Carried forward by Akhilesh Katiyar's party. अखिलेश कटियार जी, आपका अपना एजेंडा था जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। एजेंडा वो एक जो संविधान की जो गाइडलाइन थी कि हमें यथास्थित बना के रखनी है, हमें जो गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की थी, वहां के डीएम ने अपना काम निभाया, वहां के प्रशासन ने अपना काम किया। अभिजीत जी भी बात कर रहे थे, जब मैंने बात कही कि भाई हिंदुत्व की बात है, धर्म की बात है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का हर दिन बयान आ रहा है कि अब हमें विकसित भारत बनाना है, तो उसके लेके बात होनी चाहिए। अभिजीत जी, जाके जाए न पांव बेमाई, वो का जाने पीर पर आई। तुम हिंदू दूसरे तरीके के हो, हम हिंदू दूसरे तरीके के। अब नए हिंदुत्व में ये बराबरी कैसे होगी, बात इस पे भी करें। उसके बगैर विकसित भारत कैसे बनेगा? आप हमें अछूत कहते हैं, मेरे नेता गंगा जल से बोलते हैं,
वहां इस नए हिंदुत्व में हमारा रोल कहां है? आप जैसे हिंदू बनना चाहते हैं, ब्राह्मण के बराबर हमारा दर्जा है क्या? हम आपके यहाँ धर्माचार्य बनेंगे क्या? हम पुजारी बनेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ आपको धर्माचार्य बनना चाहिए, पर आप किसके आप बनेगा? से लेके अब तक there should be absolutely no bar, no first bar on any this thing. क्या जाति You are the ones लास्ट वर्ड, जहां हम राम राम का नाम लेकर देश को एक कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू यूनाइट द कंट्री, वही समाजवादी पार्टी का अब डिवीजन टैक्टिक्स आ जाता है। बस ये राम के नाम पे कोई भी शगुफा छोड़ो, बस हिंदू को हिंदू से मिलने ना दो, और सोसाइटी में कहीं ना कहीं डिवाइड बनाए रखो। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्लीज रिस्पॉन्ड, फाइनल कमेंट। Navika ji, a lot of comments have been made, but if you look at the entire history of the movement, at every stage, Congress party and its prime ministers, mainly from the Nehru-Gandhi family, opposed it. We are not making it political. It's the leader, prime minister of the country, who is going to inaugurate, who is going to do the Pran Pratishtha at a temple, which became a reality because of a court judgment, Supreme Court judgment, with the intervention of the government. The Supreme Court, it was the Supreme Court which ordered the government of India to constitute a trust through which a construction of a temple can take place. So this is not purely, this is certainly a religious matter, but with the constitutional permit and permission from the highest court of the country, and with the involvement of the government by the constitution of a trust. And why should the Congress party object to it? What is political about it? By not coming to this Pran Pratishtha, it is the Congress party and other political parties who are trying to make it a political issue. They are trying to indulge in another instance of vote bank politics to say that we are not supporting Ram Mandir. To let the Hindus of this country know that it's the Congress not so much party Ram ka dar as it is Modi ka virod that is clearly influencing their decisions. But I don't know. I'm fortunate, among the fortunate people who have an invite, and I will go there. Even if I did not have an invite, I would have gone because as a journalist, I would have had the opportunity to see and witness and report on a historical moment in our lifetime. Why would anybody else give up this opportunity is something that completely defies reason. And ladies and gentlemen, as I thank my panelists on debate number 1, on the other side, please hear the words of a Pakistani Hindu cricketer, former cricketer, Danish Kaneria, who joins me on the News Hour, bringing his feelings and his bhav for Ram and what he feels about it.